मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल दूँ? बोल दें। अच्छा, मुस्लिम ओके। हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ओ, रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। डन। सो माशाअल्लाह। इसके अलावा भी कोई सूरह सीखा है क्या? सिर्फ इतने पे ही खत्म हो गया आपका कुल इस्लाम? हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। चलिए, वाह सही है, वाह सही है, Yeah, सही yeah, है। yeah. आने दे, आने दे। Yeah, yeah. So, the person, अब एक मैं बांग्लादेश की हूँ। एक actually I got to know about you guys once when you were interview साहिल भाई साहब आप जब interview कर रहे थे आसाद नूर, since I हम्म। follow him, उसके जरिया में आपके सजेशन आए। और क्या बात करेगा रे बाबा, इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो कैसा बात होगा रे बाबा। आ इंटरनेट गई, आ नहीं गई, वापस आ चलता गई, है। वापस आ गई, वापस आ गई, वापस आ गई। बैकस्टेज, बैकस्टेज ऐड के करें। लेकिन यार मोमिन अमेरिका चले जाए उनका इंटरनेट फिर भी खराब रहता है। I don't know why it's happening. uh, um, तो फिर मैं जी को भी एडम जी को भी फॉलो करने लगे। तो इट्स बीन 23 ईयर। या इनका इंटरनेट फिर फिर गए, टूट गया है। फिर आ गया। चलें, कैसा वापस ऐड इंटरनेट करें। है यार, इस पे इंटरनेट वाले पे केस करना चाहिए। I don't know why it's happening. I don't know. आप मोबाइल डेटा पे है या वाईफाई पे कनेक्टेड है? वाईफाई मैं वाईफाई से कनेक्टेड है? वाईफाई पे ही कनेक्टेड हूँ। ओके, आपका वाईफाई आपका साथ नहीं दे रहा, आपके पास डेटा कनेक्शन है? नेटवर्क मतलब आप मोबाइल अब जो ठीक भी है? कनेक्शन आप। अब ठीक है? ठीक है, बोलते बोलते आप गायब हो जाती है, बात कैसे होगी ऐसा? अच्छा, अच्छा। तो अम, हाँ, जो जो प्रॉब्लम है कि रेफरेंस नहीं मिलती थी 23 इयर्स अगो जब मैं आई वाज 16। बट देयर वाज अ स्ट्रगल व्हेन आई वाज यंग एट दैट पॉइंट। जो आपके 40 ईयर ओल्ड के मोमिन बहुत कह रहे ये इस्लाम नहीं तो कौन और कब कोई मोमिन आपके वहाँ आके बोलते हैं कि आप सिर्फ इस्लाम के पीछे ही क्यों हो। मेरे एक क्वेश्चन है, मैं उन इट्स माय आंसर टू देम। इफ आई एम मैरिड टू अ गाय who has been torturing me right and left and I leave the guy, किसके बारे में गाली गलौज करूं? मेरे नेबर की हस्बैंड के बारे में और जिसके साथ मैं रह रही हूँ और हम्म। डिवोर्स हुआ और जिसको मैं छोड़ दी हूँ बिकॉज वो बदतर आदमी थे। गॉड क्या से बात है। but for God's sake, that's not real. I'm just using metaphor. Though I believe मेरे metaphor जो use कर रहे हो, it's not like Zakir Nalayek. मैं जैसे इट्स अ गुड एग्जांपल। yeah, it's at least appropriate example. तो मैं इसके लिए ही मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं इस्लाम में थी तो मैं इसके बारे में ही ना बात करूंगी। मैं इसके बारे में तो जान बूझ के सीख के आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अब आप लोगों को इस बारे में स्ट्रीम में बात कर रहे हो। इट्स जस्ट नॉट ओनली थिंग दी वे वो लोग आयत और ऑल दिस क्या कहते हैं वो हदीस के नंबर दे दे के बात करते हैं ना, रिफ्यूट रिबॉटल करते हैं वो सब लोग। उसके अगेंस्ट में कभी कभार मुझे नहीं पता कौन लोग वहां पे जाके बैठ के चुपचाप सुनते हैं। तो मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास कि जो आप वाह जी भाई, एक्स मुस्लिम ही फिर है। इंटरनेट। हाँ, एक्स मुस्लिम है लेकिन एग्जाम्पल बड़ा तगड़ा दिया है इन्होंने। हाँ, कुरान जो मैं आई डू नॉट केयर व्हाट हिंदू रिलीजियन is stating here because they are not imposing their law on me. Christianity is not about today. They are not imposing all these things. Look at all the Christian countries. All of us, wherever we are, if अगर हम Islamic law इम्प्लीमेंट जहाँ पे नहीं होते वहां पे हम बहुत सुकून से रहते हैं। बॉटम लाइन
जो यहाँ पे जो बातें करने आते हैं कि तुम इस्लाम के बारे में क्यों ना बातें करते हो, क्योंकि मैं इस्लाम से हूँ ना, मैं तो मुस्लिम हूँ ना। मेरे जो तकलीफें हैं वो तो इस्लाम से आ रही है, कोई हिंदू तो नहीं कर रहा है कि तू ऐसे चल। Oh man. दीदी का इंटरनेट फिर गया। आई एम नॉट Yeah. इक्वल टू अ ह्यूमन बीइंग। मेरे डिसीजन, लाइफ के डिसीजन कोई और ले रहे हैं, तो इट्स लाइक मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? एक हिंदू आके बोलेगा यहाँ पे? नहीं, मैं बोलूंगी, मुझे ओन करना है। और क्या 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 होते हैं, आई नो। तो इस बारे में फिर गया इंटरनेट, फिर वापस हम आया। लोग जो मुशरिक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये सब बहुत दिक्कत। एंड आई फील फॉर इट सिंस चाइल्डहुड। जब एक एक कंडीशनिंग होते हैं हमारे यहाँ पे, सिंस आई हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम एजुकेशन, सो कंडीशनिंग इज अ बिच। आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। सो जब आप एक कंडीशनिंग में होते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सब मुस्लिम होते हैं, वहाँ पे तो आपको, अगर मैं एक मल्टीकल्चर में रह रही हूँ, क्यों मेरे सब आसपास के लोग मुस्लिम हैं? क्यों हमारे आसपास के लोग हिंदू होते भी हमारे साथ उठ बैठ, क्यों क्यों ये एक्सक्लूसिविटी? वेयर इज द इंक्लूजन हेयर? नहीं ना। तो वो सब तो क्वेश्चन करना पड़ेगा सबको। जब मैं क्लेम करना चाहूंगी कि ओ हमारे, जब भी वुमेन राइट के बारे में, ओ पायनियर, इस्लाम इज अ पायनियर ऑफ वुमेन राइट, देन व्हेनेवर स्लेवरी कम्स, ओ इस्लाम इज अ पायनियर ऑफ स्लेव्स राइट। जब भी जो भाई भाई सब कुछ आप अगर पायनियर हो, आप मुझे डॉक्यूमेंट दो। सफरिंग्स तो हमारी है, आप मुझे डॉक्यूमेंट दो आई हैव मेंशन दोस थिंग। बट अब मैं नॉन मुस्लिम कंट्री में रह के मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आई डिसाइड who I am married to, I decide what subject I will study, I decide how many kids I will have, I can decide how I will clothe, I decide what I would drink. Nobody else get to decide that. I will decide it. It's me. I have all the right to do my shit. No religion get to decide that for me. And absolutely coming from a Muslim background. And thank God my parents told me about this. And बहुत जबरदस्त। and some of these people, no, मेरे parents जो है वो मुस्लिम ही थे, पर कभी ऐसे कुछ एक्सट्रीम इवेंट, आई लेट मी गिव यू एग्जांपल। मेरे डैड बहुत प्रोग्रेसिव काइंड, मेरे मॉम यूज्ड टू डांस, माय मॉम यूज्ड टू सिंग एवरी डे प्रैक्टिस। शी नेवर परफॉर्म बट शी ऑलवेज sang प्रैक्टिस एट होम। तो हम लोग वो करते थे, मेरे टीचर थे म्यूजिक के। तो एक दिन वन ऑफ माय सिबलिंग गॉट मैरिड, एंड I'm not gonna say he or she. उनके जो स्पाउस थे वो बहुत रिलीजियस थे, तो वहाँ पे एक मिलाद हो रहे थे। तो मिलाद के समय मेरे एग्जाम थे, तो एग्जाम थे मेरे जो ब्रदर के स्पाउस, सॉरी माय ओके, माय सिबलिंग के स्पाउस ने मुझे बुलाया, तो के प्रे कर लो। तो ये मेरे जो यहाँ पे खातून है, उसके एग्जाम है, हुजूर आप दुआ कर दीजिए। मेरे पिताजी जो है थे, वो नहीं रहे मेरे साथ अब। तो उन्होंने स्क्रीम करके बुलाया मुझे, जे तंजीना, लाइक यू कम, आई एम सॉरी। So, so I went there. I went there after finishing up the prayer, and my dad said, "You know what? Why you have an exam? आपके अल्लाह के लिख नहीं देंगे, आपको पढ़ना चाहिए, दुआ काम नहीं करेगा tomorrow." That's all my dad said to me. So that's what I want to say, that this is not right what's going on. People like Zakir Nalayek,
जो सब बातें करते हैं, these are not right. And guess what? Like my great grandfather, my दोबारा ऐड करें, आ गई वापस। they know Islam. My great grandfather did graduate from Aligarh University. They knew Islam. Sorry, they knew Islam. And they knew that all kinds of shams that there were, and I knew those things coming from a family, and my parents, the kind of awareness. My grandfather, मेरे जो grandfather, my mom के dad थे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इस्लामी हिस्ट्री में मेजर थे। वो भी नहीं किया वो सब। उन्होंने उनके सब बच्चे बच्चियों को म्यूजिक स्कूल, डांस स्कूल में भेजते थे। ठीक है, तो what kind of is this? Like then अगर मेरे एक question है, तो कौन the kind of Islam we have in India, Bangladesh. My conversation will be too long if I talk about it. But the thing is, they actually studied during when they were doing the business and everything with Asia. They studied all the culture, and they in each area. When you study, if when you interview people, look at the history, different area would say, tell you that how Islamic ideology was, and like we have different history, how this ideology entered, and the way Bangladesh was Buddhist majority country, and the ideology they sold to us is through Sufism. Okay, and वहाँ पे very whitewashed ideology. They we did not read the Quran in any other language but Arabic. Okay, but thing is, if you the reason, that's how they kept us blind. That's how they kept us blind. And then when we started now, and I have like in 1999, after 2000, there were so many attacks in Bangladesh, and 9/11 happened. Like, really, this is the Islam? Like, I was kid at that time, and that word struck me, that hey, I have to, like, what kind of Islam they are learning. My dad said they are not wrong. Then I looked into it. I was reading the translation. My mom used to say, hey, don't get confused. Turning, kind of praying, the kind of thing as they were growing up. The study area that I picked, some of my friends said, hey, we are Muslim, why are you studying in this area? I'm not gonna say the subject that I studied, my expertise, but I'm like, no, I'm gonna learn it. And as I learned, I was like, अच्छा अम्मीबा जी, yeah, सिर्फ एक चीज बोल दूं कि बीच बीच में आप कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देना जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो आई नो कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालना चाहती है और एक मौका भी आपको मिला है, बट थोड़ा सा सोच समझ के आप अपनी बात रखिएगा, सो दैट यू डोंट रिवील एनी पर्सनल डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ। Yeah, sure. So like that's how I got to know that. And but जब growing up मेरे पास उतनी information भी नहीं थे। अब जब different side, I'm not gonna say the name of it, since I'm a Bengali, there are different side. Kids, men and women are working hard to put those, and you guys are inviting those really very famous people in Islamic world to, hey, come talk to us. Why aren't they talking to you guys, right? That's the fair question I can have. So as a Muslim, that's what. And yeah, it's been 23 years.
So, I don't talk about it. I never disclose, but people can tell. People can tell from my lifestyle. But you know, ये आप जो बोल रहे हैं, as long as you are not criticizing, you are living in a country where you are safe, it's okay. But what's going on in Bangladesh at this point, the pictures that I can see, young kids are flying what's that you know, the flag, black and white flag with la ilaha illallah Muhammad Rasulullah on them. Hmm. It's sad what you said a minute ago. Islamic, these things are here. It will come back. It's sad. It will Hmm. come back because 1971, we came out of this war. We were like, okay, cultural, and we had our struggle. And then in like, it's just back and forth. I'm just tired of it. Like in 2000 to 2006 in our country, like 50 plus districts were bombed by these people, Islamic group. And then in 2009, 10, it got better. Again, it started. Like these people, these are cockroach. I'm sorry, they are cockroaches. You need, I don't know, like they need to be controlled. Um, uh, it's a parasitic. I'm Hmm. sorry. तो I have अमीबा no जी, word for it. Yeah. अमीबा जी, ये कब आपने इस्लाम से बाहर निकलने का डिसीजन लिया? 23 years. I'm quite old. I'm not that young. Yeah, yeah. अच्छा, Yeah. जब आप 23 साल की थी तभी आपने इस्लाम छोड़ दिया No, था? 23 years ago. I'm not 23 अच्छा, right now. 23 इयर्स अगो Years आपने ago. इस्लाम छोड़ा, मतलब When I काफी was पुरानी 16. एक्स मुस्लिम है आप। Yeah, yeah. But मतलब as I 16 साल said, में आपने छोड़ दिया था? yes, अरे वाह! because you know, as I said, my environment allowed me to look into things, question, and yeah, and then seeing the change in front of me, kids, those who are having fun, all of a sudden they get into college, they are telling me what subject to study, not to study, and this kind of thing, and what to talk about, and all of a sudden they are going to cooking school and things like that. हमारे थोड़ी ब्रेक होते थे उस टाइम पे, no, I don't have any problem with joining cooking school, but it's just जब some girls going to cooking school and my parents are sending me to take some computer courses, that's where like I saw like, okay, why we are so much in rush to becoming a woman. I'm only 16, 17, 18, so that those are the thing. Then people are telling that as I said, मैं बांग्लादेश में से हूँ, वहाँ पे ऐसे तो होते हैं फैमिली मेंबर्स की शादी होने, मेरे फैमिली में एक स्ट्रगल चल रही थी तब, तो उस टाइम पे मैं 12th ग्रेड में 18 साल की थी, तो उन्होंने कहा कब कोई कुछ रिलेटिव आके बोल दिए कि इसको शादी दे दो, शादी करा दो। मेरे डैड जो थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सुना, बट वो उसको जो करना था उन्होंने कहा करा, मैं मुझे जो करना था मैंने कहा, पीपल से दिस थिंग, but again, at least back then these mullahs used to deny all this. Now they cannot even deny when you question on Aisha, you know, when you question on um, all these women, all these kept. So that's a good start. Again, I'm not hopeful what I have seen in Bangladesh, because this needs to get out of the way. And in many countries, we can see whenever there is extremism, it goes, it comes back. See, as you use the example of Iran, um,
even back then when Iran got into this extremism, before that Arab was not even that extreme, but that also got into, and then this king will die or go away in another, we don't know how they stabilize, because it's very much a thing, like if there is a king or a government, so that those who are running their country according to Sunnah, that always impacts Muslim majority country. Not only that, any area, even in right, what's going on in Europe, and in a small way in America too. It's sad. In Canada, Right. you look at these places. It's like so I don't know what to hope for actually. I'm not सही saying that तो I'm not. Yeah. ठीक है अमीबा जी काफी बातें आपने बताई आपने और बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी और आपने अपनी सारी यानी जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है आई एम श्योर कि एक अकल वाला अगर मोमिन होगा तो और खास करके जो खवातीन होंगी उनके समझ में आएगी कि भाई ये किस तरीके से आप लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हैं एंड व्हाई यू कैन नॉट टेक द डिसीजन। तो थैंक यू सो मच अमीबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने का। और अमीबा जी के लिए गुलाब का फूल भेज दे सारे लोग। पुरानी एक्स मुस्लिम है, 23 साल पहले ही इन्होंने इस्लाम को त्याग दिया था एंड शी इज वेरी ब्रेव। Thank you. Yeah. थैंक यू सो मच। Okay, I'm जी going. Thank you for the platform. Bye. जी जी जी, ख्याल रखिएगा अपना। Yeah.